students, today we will be doing the experiment of 3 voltmeter method. 3 voltmeter method is used for measurement of power in a single phase circuit. So as you can see, this is your circuit diagram for the 3 voltmeter method, where we are having 1, 2 and 3 voltmeters, and a ammeter is connected in series, and there is a resistance and there is a choke coil. Choke coil is your load, and rheostat also we have connected. As you can see, this is the whole experimental setup. This is the rheostat which we are using, and this is the load which we are seeing. तो एज़ यू कैन सी ये है बेसिकली हमारा स्कीमेटिक डायग्राम, और इस डायग्राम के अनुसार ये यहाँ पे इसका फेज़र डायग्राम बना हुआ है. जैसे कि आप अपन को दिखता है, सबसे पहले हम रेफरेंस वेक्टर अगर हम करंट आई ले लेते हैं तो करंट आई जो है और जो ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस होगा वो सेम फेज में होगा, जो कि अक्रॉस द रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो आई इंटू आर होगा, दैट इज़ नथिंग बट द वोल्टेज V1. अब जो रेजिस्टेंस और रिहोस्टेट अक्रॉस, मतलब जो चोक कोयल के अंदर का रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस है वो उसको हम प्लॉट करेंगे. तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम फेज में जो करंट के सेम फेज में ही, मतलब ये जो करंट हमने ड्रॉ किया था इसी को हम एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हम ड्रॉप दिखा सकते हैं आर एल ड्रॉप. तो ये हो जाएगा आई इंटू आर एल जो ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस है. अब इससे 90 डिग्री पे आपका होगा रिएक्टेंस में जो ड्रॉप है, यानी कि आई इंटू एक्सएल, और ये जो ड्रॉप से आई इंटू आर एल एंड आई इंटू एक्सएल का फेजर सम है V2. ये हमने यहाँ पे V2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और V2 और इस V1 का जो फेजर सम है वो है आपका V3, विच इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल्स टू आई इंटू इम्पिडेंस Z. ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा फेजर डायग्राम बन गया. और इसको ये जो आई इंटू आर ड्रॉप है इसको हम V2 cos फाई भी लिख सकते हैं, और इसको हम V2 sin फाई भी लिख सकते हैं. तो ये यहाँ पे रिटन है. उसके बाद अगर हम यहाँ के पावर की वैल्यू फाइंड करें जो इस चोक कोयल ने कंज्यूम करी है, तो दैट इज़ नथिंग बट V2 इंटू आई इंटू कॉस फाई, क्योंकि V2 इसके अक्रॉस का वोल्टेज है और करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है वो I है और कॉस फाई. ठीक है, तो और I को हम क्या लिख सकते हैं, I कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज V1 अपॉन R. आई कैन बाई ओम्स लॉ वी कैन राइट I एज V1 अपॉन R. तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो P की वैल्यू हो जाएगी आपकी V1 V2 R अपॉन R इंटू कॉस फाई. ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, आर को अगर हम इधर लेके चले गए तो हम इसको लिख सकते हैं V1 V2 cos फाई. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल हम इसको लिख सकते हैं, ये अगर हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, ये O है, ये B है, ये A है और ये C है, तो हमारा OB विल बी इक्वल्स टू व्हाट, OC प्लस CB. तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, OB इज़ नथिंग बट V3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू V1 प्लस V2 cos फाई. ये हमारा V1 है प्लस ये V2 cos फाई है, और ये वाला जो है वैल्यू, इसकी वैल्यू है V2 sin फाई. ये भी होल स्क्वायर में आप इसको ओपन करेंगे, A प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस ये वाला जो रहेगा V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई. अब आप V2 को एक जगह कॉमन हमने ले लिया, और इसका कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई. कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1. तो हमारा फर्दर आवर इक्वेशन इज गोइंग टू बॉयल डाउन टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos फाई. नेक्स्ट, taking this quantity on one side and the rest on the other side, we get this as the equation. Then V1 V2 cos phi can be written as V3 square minus V1 square minus V2 square upon 2. From equation number 1 we can replace these terms as P into R, and from there we can write P will be equals to V3 square minus V1 square minus V2 square upon 2R. This will be equation number 3. And the equation for the power factor can be derived from the equation number 2, which is this, as cos phi can be written as V3 square minus V1 square minus V2 square upon 2 V1 V2. So this is the equations which we are using for this particular. This is your auto transformer, and from the auto transformer we have connected a lead to the ammeter, and the another end of the ammeter is going to your rheostat. It is going to the rheostat, and from as you can see, the ammeter we have connected to the our auto transformer, and from the auto transformer we have also connected the voltmeter which is connected here in parallel. See, this is the voltmeter which is connected in parallel. This is one point, this is one point, and another point of the voltmeter is this one. These two wires are connected in parallel with the auto transformer, and from the auto transformer we have also connected the ammeter, and from the ammeter we have connected one wire to the rheostat, which is 270 ohms rheostat, which we have connected in the circuit, but we are varying it, so we will, with the help of the
multimeter, we will see what is the resistance that is connected in the circuit. Next, from that rheostat, the other end of the rheostat is going the other end. As you can see, the other end of the rheostat is going to the choke coil, and from the choke coil, the other end is going back to the auto transformer. So this is one whole circuit completed, and in parallel with the rheostat we have to connect one voltmeter, and with the choke coil we have to connect another voltmeter in parallel. So these are the two wires which we have taken in parallel from the see, this one, this wire and this wire is in parallel with the choke coil. Okay. Next we will see what is the resistance that is coming into the circuit. So for that we have connected the multimeter, and in the taken the multimeter, and the multimeter we have connected it in ohms, and here is the common and the range which are here connected, and with the help of these knobs we are going to press it over this terminal and this terminal and see what is the effective resistance that is coming into the circuit. Supply on कर दिया है. अब with the help of this auto transformer we are going to move it, and we are going to look at this voltmeter that is connected in parallel to the auto transformer, और हम इसको 230 volts आने तक हम उसको move करेंगे. दिख रहा है आपको? यहाँ पे जब ये 230 पे आ जाएगा, ये 230 volts पे आ जाएगा, so we will stop. Now हम ammeter ना हम एमीटर की रीडिंग देखेंगे. सो अगर आप देखेंगे तो इट इज़ कमिंग एट 0.3 amps is the current coming, and the voltage across the choke coil it is approximately coming to 210, and here as we see it is coming to 62 volts. So we have already we have written it. So this is the calculation. We have 230 volts across the supply, 210 volts across the across the choke, and 62 volts across the rheostat, and 0.3 amps is the current flowing through this particular circuit. And as we have seen, the resistance of the rheostat was calculated at 36.7 ohms. So plugging all these values into the equation of power, you get the power as 67.52 watts, and that the power factor of this particular circuit is coming to be 0.1. For understanding or for finding out the value of the resistance and the inductance of the choke coil, as we have seen that V3 will be equals to what? I into Z, that is impedance, which is equals to Z can be written as V3 upon I, which is equals to 766.6 ohms. Z can be written as RT square plus XL square. So RT is basically the resistance of the rheostat plus the resistance of the choke coil. That combined will give you R total, which is going to become this R was measured by 36.7 ohms from the multimeter, and RL is calculated as V2 upon I current flowing through it. It will come approximately as 700. Combining these two, we get RT as 736.7. Putting it into this equation, we get XL equals to, after solving this, you get XL equals to 212.01 ohms. Okay, then XL can also be written as 2 pi f into L. Frequency of the supply, as we know, is 50 hertz. So L can be written as XL upon 2 pi upon f, which is equals to 0.67 4 henries or 674 millihenries. So this is how we will find out the inductance L as well as the resistance of this particular choke, if you want to find out. Okay. So that was all for choke coil experiment. For 3 voltmeter method used for measurement of single phase supply using the choke coil. Thank you.